Now let's start over here with the seventh chapter of Footprints Without Feet. Actually, these few chapters are not included in this year, at least board के course में हिसाब से due to this COVID-19 and lot many other things that we have passed through in this particular year. But जैसे कई बच्चों ने मुझे Zoom lecture में बताया था that मैम when are you going to do that one particular interesting chapter, मैं तो कहूँगी सारे जो बाकी के interesting हैं, but I had to pick up one. तो मैंने ये पिकअप किया. Yes, if you want to do the other two also, last one I don't think so you need to do, क्योंकि वहाँ पे Earth and planet और उसके बारे में not actual scientific, but it is something very weird chapter. तो it's like a play over there. But I would say necklace और उसके बाद एक भोली करके है, which is awesome, very very interesting, related to many things you will learn from these chapters. जैसे ये नेकलेस है तो वहां पे एक मॉरल गिविंग है, when you and you will see one animated video at the end. उसी तरह से भोली जो एक चैप्टर है, you will if you want me to you can just message कर देना मुझे, तो कभी बीच में वो भी ले लूंगी, because from the next lecture or next week I am starting with again in detail grammar section, तो काफी टाइम उसी में चला जाएगा. And once again, let me tell you that those who are not coming to class, please need not worry. You are going to get 100% everything that the students are going to come to class will get. क्योंकि कुछ भी classes में हम नहीं पढ़ाने वाले. We are going to solely teach you online. So because we intend, हमारा main intention है कि हम जो नहीं आ रहे हैं बच्चे for any reason, हम उनको भी उतना ही respect दें जितना कि जितने बच्चे आना चाहते हैं, दोनों को equal respect. But I don't want कि those who are not coming, they should miss out anything from my side. So don't worry dear, just go through the videos. और ये तो एक I would say इस साल का एक bonus lecture है, interesting relaxation, कि बहुत कुछ पढ़ाई कर ली, चलो अब थोड़ा रिलैक्स होना है तो एक ये स्टोरी सुन लो, थोड़ा मेरे डायलॉग सुन लेना, मॉरल लास्ट में आ जाएगा वो देख लो, ठीक है. So the necklace. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. अब Matilda बड़ी सी पार्टी में इनवाइट की गई है, that you will come to know later on how and what and who and why. She has a beautiful dress, लेकिन बेचारे के पास ज्वेलरी नहीं है, like some necklace and all. She borrows the necklace from a friend and loses it. Now let's see what happens. Right? Read and find out what kind of person is this Madame Loisel. Why is she always unhappy? यहीं पे moral पता चल जाएगा last वाला. What kind of a person is her husband? Now she was, that is Matilda, or Madame Loisel. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny. मतलब कि destiny मतलब नसीब, एरर मतलब भूल. भगवान से शायद भूल हो गई थी कि इतनी ब्यूटीफुल यंग लेडी को बॉर्न, मतलब उसका बर्थ हुआ एक गरीब से घर में, इनटू फैमिली ऑफ क्लर्क्स. शी हैड नो डाउरी, नो होप्स. ना डाउरी दे पाती थी, ना उसके मम्मी पापा की इतनी हैसियत, ना उसके कोई सपने, ना सोच विचार, कुछ नहीं. नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, कोई ऐसा जरिया नहीं था उसके पास जिससे कि वो फेमस बने. Loved by someone, married by a man, rich man or some distinguished, जाना पहचाना पर्सनालिटी कोई आके उसका हाथ मांग ले, ये तो पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, क्योंकि ऐसी फैमिली में वो पैदा हुई थी. Though she was very beautiful, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the board of education. और एजुकेशन बोर्ड के ऑफिस में एक काम करता हुआ एक पेटी क्लर्क, मतलब एक लो पोस्ट जॉब पे बहुत ही सिंपल सी लेस सैलरी, लो सैलरी वाले एक आदमी से शादी करनी पड़ी. She was simple but unhappy, right? Very very unhappy lady, always unhappy with life. क्योंकि उसको पता था वो beautiful है और उसे लग रहा था that I was actually meant to be, you know, like a known lady, to be married to a big family, and I should have lots of jewelry and good clothes and all. लेकिन नहीं हो पाया because of the family where she was born. तो शायद यही थी डेस्टिनी की एरर या भूल. She suffered a lot, that is incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. हर बार ये feeling आती that I'm actually born for, you know, delicate things and luxuries and all. लेकिन ये क्या, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा. तो बस इसी सोच में सफर करती रहती. She suffered from poverty of apartment. खुद जब शादी के बाद भी देखा तो अपार्टमेंट में गरीबी दिखाई दे रही है. Shabby walls, dirty walls,
फटी पुरानी कुर्सियां, that is worn out chairs, all these things tortured and angered her. अब इससे तो उसका दिमाग, उसको टॉर्चरिंग फील होती थी, गुस्सा आ जाता. When she seated herself at dinner opposite her husband, who uncovered the tureen, मतलब एक ऐसा बाउल ढका हुआ जिसके अंदर सूप रखते हैं, with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." अब देखो ये आदमी को देखो, उसे ज्यादा गुस्सा कब आता जब वो अपने हस्बैंड के सामने बैठ के डाइनिंग टेबल पे डिनर लेने, डाइनिंग टेबल मतलब वो एक कुर्सी छोटा टेबल, डोंट वरी, नॉट अ लग्जरियस वन, और तब हस्बैंड उस पॉट जिसके अंदर सूप होता है वो खोल के कहता, वाओ क्या सुगंध है, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर. लेकिन ये वाइफ, उसको तो लगता कि आई एम मेंट फॉर luxurious dining table and exquisite food served in marvelous silver dishes, shining dishes, and elegant dinners के लिए मैं पैदा हुई हूँ. But I'm not getting all this thing. She had neither frocks, nor jewels, nothing. And she loved only those things which she didn't have. She had, she had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she didn't like to visit. अब उसकी एक फ्रेंड थी, रिच फ्रेंड, उसको क्यों अब मिलने नहीं जाती थी? क्योंकि वो पैसे वाली थी. वो देख के और जेलसी होती. शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, क्योंकि उसको पता था कि उसके घर से आने के बाद वो जेलसी में आधी हो जाती थी, सफर करती थी, दिमाग खराब हो जाता, गुस्सा आता, रोना आता. शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर, मतलब दुख, सॉरो एंड डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन. वन इवनिंग हस्बैंड रिटर्न elated, happy, top of the world feeling के साथ हस्बैंड घर पे आया ऑफिस से, bearing in his hand a large envelope, और हाथ में था एक big envelope. Here, he said, is something for you, dear. She quickly drew out a printed card on which was written, "The Minister of Public Instruction and Madam George Rampignon asked the honor of Mr. and Mrs. Lawson's company. Monday evening, 18 Jan, at the Minister's residence." एक बड़ी सी पार्टी थ्रो की थी ये मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन मैडम ने, तो उनको बुलाया गया था. मतलब ये ऑफिस में काम करने वाले लोगों को कार्ड कॉमनली दिया गया था, तो इसके हस्बैंड को भी मिल गया. इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी एज अ हस्बैंड एट होम, हस्बैंड को लगा वाओ मेरी वाइफ तो कूद पड़ेगी खुशी के मारे, क्योंकि वो तो रोने लगी, दुखी हो गई. शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली, गुस्से में, हेट्रेड से उसने वो इनविटेशन कार्ड यूं फेंक दिया अपॉन द टेबल, मर्मरिंग, व्हाट डू यू सपोज आई वांटेड दैट. मतलब कि ये लेडीज करती रहती ना, जब कुछ कंप्लेन करनी है तो धीरे धीरे करेगी, मैं क्या करूंगी इसका, कुछ समझ में नहीं आता, बस लाते तो हो नहीं कुछ, ये ला के दे दिया, अब इस शादी में या इस पार्टी में क्या पहन के जाऊंगी, और अगर पहन भी लिया कुछ अच्छा तो ये नहीं है वो नहीं है. मोमन अपने आप से धीरे 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 हल्के से बोलना, तो उसको तो गुस्सा आ गया. बट माई डियर, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी. अब बेचारा इतना सीधा साधा हस्बैंड को कहता है, मुझे लगा तुम तो खुश हो जाओगी, यू नेवर गो आउट, और ये एक चांस मिला है तुम्हें, दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन ऑफ कोर्स, एवरीबॉडी विशेस वन, बट सी हु इज सिलेक्टेड. आई वाज सिलेक्टेड, आई गॉट दिस. बहुत एम्प्लॉइज हैं लेकिन बहुत कम को मिला है. नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉइज, यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, मतलब पैसे वाले लोगों को मिलोगी तुम वहां पे. She looked at him with an irritated eye, लेकिन इसको तो गुस्सा भरा पड़ा था, and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या पहन के जाऊंगी इतने बड़े पार्टी में, कुछ पता तो चलता नहीं." आके खुशी में डाल दिया कार्ड मेरे हाथ में. He had not thought of that. हाय बेचारा हस्बैंड, वो कहता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं. He stammered मतलब अटक के बोलना. Why? The dress you wear when you go to the theater. बेचारा समझ गया, और एक थप्पड़ पड़ने की ही देर है वाइफ के हाथ से, तो उसने अटकते हुए कहा, अरे भाई वो वाला ड्रेस जब हम थिएटर में जाते हो और तुम पहनती हो कितना ब्यूटीफुल है, इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी. अचानक से शांत हो गया, एंड स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग. एकदम से बेचारा स्टॉप हो गया, शॉक्ड, इन सॉरो ऑफ कोर्स, बट क्योंकि वाइफ रो रही थी. ही स्टैमर्ड, व्हाट्स द मैटर, एंड बाय वायलेंट एफर्ट, बहुत कंट्रोल किया वायलेंटली, and she had control of vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. गीले उसके चीक्स को ऐसे साफ करते हुए इसने बहुत ताकत इकट्ठा करके कहा शांति से, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस, एंड रिजल्ट आई कांट गो टू दिस अफेयर. कॉन्सिक्वेंटली मतलब द रिजल्ट इज आई कांट गो टू दिस पार्टी, क्योंकि मेरे पास ड्रेस है नहीं.
गिव योर कार्ड टू सम कलीग whose wife is better fitted out than I. और अपने किसी फ्रेंड, कलीग मतलब साथ में ऑफिस में काम करने वाले, किसी को जिसे नहीं मिला है कार्ड उसको दे दो, शायद उसकी वाइफ के पास बेटर कपड़े होंगे, ज्वेलरी होगी और मुझसे बेटर होगी फिटेड वहां पे. He was sad, but he said, let's see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple. चलो देख लो, बता दो कोई ऐसा कॉस्ट्यूम जो आज भी पहनो बाद में भी काम आ जाए. समथिंग वेरी सिंपल, लेकिन अच्छा हो, तुम्हें पसंद आए, ऐसा कितने तक हो जाएगा. शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड. उसने रिफ्लेक्ट मतलब कुछ गिनती की दिमाग में. शी थॉट फॉर सम सेकेंड्स, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. अब ये बेचारा हिसाब किताब करने वाला क्लर्क ऑफिस में, छोटी सी पेमेंट, लो पोस्ट ऑफ क्लर्क इन द ऑफिस. अब ये सोच रही है लड़की कि अगर मैं बड़ा सा अमाउंट बोल दूंगी तो इसकी ना ही होगी और ये बेचारा शॉक हो जाएगा, बेटर और डर भी जाएगा, फ्राइटन एक्सक्लेमेशन होगा. तो कुछ ऐसा कहूं जिससे वो मुझे हाँ भी बोल दे. फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, आई कांट टेल एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट आई थिंक सो 400 फ्रैंक्स और टू कवर इट, मतलब कि इतने तो लगेंगे ही, 400 फ्रैंक्स. ही टर्न अ लिटिल पेल, बेचारा का मुंह उदास हो गया. For he has saved just that much amount to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer. उसे लगा नेक्स्ट समर तक मैं हंट करने निकलूंगा अपने फ्रेंड्स के साथ, हंटिंग पार्टीज को ज्वाइन करूंगा, तो गन चाहिए. और ये एग्जैक्ट वो अमाउंट था जो उसने बचाए थे, 400 फ्रैंक्स फॉर द गन. एंड he decided that I would go with some of my friends also who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, फिर भी जाने दो. There is nevertheless, he said. Very well, I'll give you 400 francs, but try to have a pretty dress. कोशिश करना बेस्ट ले आओ इतने पैसों में. The day of the ball approached and Madame Loisel seemed sad. अब वो दिन भी आ गया, ड्रेस आ गया, लेकिन फिर से वो sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. हाँ, बात ये थी, ड्रेस रेडी था. Her husband said to her one evening, what's the matter with you? You have acted very strangely for 2-3 days. 2-3 दिन से बहुत ही अजीब बिहेव कर रही हो. And she answered, I'm vexed, I'm confused not to have a jewelry to wear. Nothing to adorn myself with. अपने आप को डेकोरेट करने के लिए कुछ नहीं है. I shall have such a poverty-stricken look. और ऐसे कपड़े पहन के मैं तो भिखारी दिखूंगी, गरीबी में से उठ के आ गई हूं वैसे दिखूंगी. I would prefer not to go to this party. He replied, you can wear some natural flowers. इतना अच्छा हस्बैंड था बेचारा, कहते natural flowers पहनो, अलग से दिखाई दोगी. And in this season they look very chic. It's beautiful. But she was not convinced. उसे कुछ संतोष नहीं हुआ. No, there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the mid of that rich women. In the midst मतलब among. Shabby air मतलब ये dirty natural flowers तुम कहते हो पहनने के लिए, ये तो मेरा इंसल्ट होगा rich women के सामने. Then husband cried out, how stupid we are. Go and find out your friend, Madam Forrester, जो उसकी बचपन की स्कूल की फ्रेंड, जिससे वो हमेशा जेलस होती थी और रोती थी घर आके उसके पैसा देख के, and ask her to lend you her jewels. She uttered a cry of joy. It's true. I had not thought of that. The next day she took herself to a friend's house and related a story of distress. दूसरे दिन वो तो खुश हो गई कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. दूसरे दिन चली गई फ्रेंड के पास. फ्रेंड ने कहा ठीक है, दे देती हूँ. She went to a closet, took out a large jewelry case or box, brought it, opened it and said, उसके हाथ में थमा दिया, choose my dear, whatever you want. She saw it for some bracelets, then a collar of pearls, collar मतलब यहाँ पहनने का, then a Venetian cross of gold and jewelry of admirable workmanship, बेहतरीन jewelry. She tried the jewels before the glass, थोड़ा hesitate भी हो रही थी, खराब लग रहा था, but could neither decide to take them nor leave them. लेकिन वो लेके भी नहीं जाना, मतलब लेके जाना चाहती थी लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कौन सा, ये पहनूं या ये छोड़ दूं, ये लूं या वो लूं. Then she asked, have you nothing more? उसने कहा कुछ और है? Why yes, look for yourself. I don't know what will please you. फ्रेंड अच्छी थी, उसने कहा बहुत सारा है, देख लो तुम्हें जो पसंद है. I don't know what will please you means what will make you happy. Pick up anyone. Suddenly this girl, Mademoiselle, discovered in a black satin box a superb necklace of diamond. Her hands trembled, shivered as she took it out. She placed it about her throat against her dress. उसने गले में लगा दिया and was ecstatic. My God, I look so beautiful and the jewelry is more beautiful.
Then she asked in a hesitating voice. थोड़ा hesitate होते हुए उसने पूछा, full of anxiety. Could you lend me this? Only this. I don't want anything else. Why yes, certainly. लेडी ने तो हाँ बोल दिया. She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. फिर वो चली गई, गले लगा लिया, थैंक्स कहा फ्रेंड को, घर चली गई ट्रेजर लेके. द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड. मैडम लॉयसेल वाज अ ग्रेट सक्सेस. बॉल मतलब वो बड़ी पार्टी जहाँ पे बॉल डांस होने वाला था, वो दिन आ गया. सक्सेस मिली क्योंकि वहां पे वो गई तो प्रिटी तो थी ही, ऊपर से ड्रेस और ज्वेलरी. शी वॉज दी प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग, फुल ऑफ जॉय. ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड. सबको उसके साथ डांस करना था, सब उसका नाम पूछ रहे थे और सबने नोटिस किया, सब मेन ने. शी डांस विद एंथुसियाज्म, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration. बस वो एक ही चीज सोच रही थी, वाह वाह क्या नसीब है मेरा, एक दिन तो एक दिन, लेकिन लोग एडमायर कर रहे हैं मुझे. दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट. और उसके लिए सबसे बड़ी विक्ट्री यही थी, और ये एकदम कंप्लीट विक्ट्री, स्वीट विक्ट्री उसके लिए थी. She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight, with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. अब वाइफ सबके अंदर थी, हस्बैंड उसके साथ, और 3 बाहर ऐसे ही सैलून में बैठे हुए आधी नींद में थे. लेडी बाहर आई है मैडम, सुबह 4 बजे. He threw around her shoulders the modest wrap they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. अब एलिगेंसी देख के आई थी, रिचनेस, लग्जरियसनेस देख के आई थी बॉलरूम में से. यहाँ पे उसके हस्बैंड ने उसको ठंड ना लग जाए इसलिए एक ढक दिया उसे लाइक अ शॉल के साथ. लेकिन उस रैप में क्या दिखाई दे रहा था? इट वाज अ मॉडेस्ट रैप. गरीबी छलक रही थी. शी विश टू हरी अवे. उसने कहा जल्दी से भागू यहाँ पे ताकि कोई लेडी नोटिस ना करे उसके उस रैप को. एंड शी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द women who were wrapping themselves in rich furry things. Loisel detained her. Wait, I'm going to call a cab, he said. But she would not listen and descended the steps rapidly. वो रुकना नहीं चाहती थी. उसके हस्बैंड ने कहा रुको मैं कैब लेके आता हूँ, लेकिन उसे पैसे वाली लेडीज इसके पहले कि देख ले उसे इतने गरीब शॉल में, इसके पहले उसे कहा मैं भाग लूँ यहाँ से. So she descended. वो उतरने लगी steps very speedily, rapidly. When they were in the street, they found no carriage. अब street में तो कोई carriage था नहीं. They began to seek for one. ढूंढने निकले. Hailing the coachman, calling the coachman whom they saw at a distance. They walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. अब एक carriage मिला, एक old carriage one, you know, जो पुराने टाइम में पेरिस में लोग देखा करते थे after nightfall. It took them as far as their door. उनके घर तक ले गया ये carriage उनको. And they went wearily up. घर पे गए. Wearily up मतलब थके हारे to their apartment. It was all over for her. लड़की का तो सपना खत्म. And on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. और आदमी सिंपल सा बेचारा हस्बैंड, उसको इतना ही आता कल सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना है. She removed the wraps from her shoulders before the glass. Glass मतलब mirror. For a final view of herself in her glory. एक बार उसको अपने इस ड्रेस में with that diamond necklace के साथ खुद को देखना था मिरर में. Suddenly she shouted. She uttered a cry. Necklace was not around her neck. My God. Loisel already half undressed asked, what's the matter? Husband बेचारा कपड़े बदल रहा था, उसे अचानक से पूछा, what's the matter? And she turned towards him excitedly. I no longer have Madame Forrester's necklace. He arose in dismay. What? How is that? It's not possible. And they looked in the folds of the dress. बड़ा सा ऐसा ड्रेस बनाया था, तो उसके फोल्ड में उन्होंने देखा, जैसे ना झटकते हैं ड्रेस को देख लिया. In the folds of the cloak, in the pockets everywhere, they could not find it. He asked, are you sure? You still had it when we left the minister's house. तुम्हें याद है कि मिनिस्टर हाउस छोड़ा तब तक था तुम्हारे पास? Yes, I felt it this way with my hand as we came out. But if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. रास्ते पे गिरा होता तो सुनाई देता. शायद कैब में गिरा होगा. Yes, it's possible. Did you take the number of the cab? No. And did you? Did you notice what it was? No. दोनों ने and you करके no दोनों के जवाब निकले. They looked at each other utterly cast down, दुखी. Finally, Loisel dressed himself again to go out in search of the necklace.
आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन द फुट. उसी रास्ते पे मैं चल के जा रहा हूँ जहां से हम चलते चलते आ रहे थे. टू सी इफ आई कैन फाइंड इट. एंड ही वेंट. शी रिमेन इन इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड. अब सोने की भी ताकत नहीं थी, मन नहीं कर रहा था. And towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspaper offering a reward. She waited all day in a state of bewilderment. पूरे दिन husband दौड़ता रहा, wife बेचारी शॉक में और डर में पूरा दिन गुजारा before this frightful disaster. Lawson returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace. कि पीछे का हुक टूट गया है तो मैं उसको रिपेयर करने दे रही हूँ, अभी 1-2 दिन के लिए दे दो, तब तक टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए. एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड. दैट विल गिव अस सम टाइम टू थिंक, टू प्लान आउट. शी रोट एज इट डिक्टेटेड. और जैसे उस हस्बैंड ने कहा, डिक्टेट किया, उसने लिखा. एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप. एक वीक हो गया, नो होप. एंड लॉयसेल, ओल्डर बाय 5 years, अब लॉयसेल एक जैसे 5 साल बड़े हो गए हैं वो लोग, डिक्लेयर्ड, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल. हमें देना पड़ेगा वापस. Diamond था. In a shop of the Palace Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000, ऐसे बताया गया डिस्काउंट में. उस ज्वेलरी शॉप ने कहा 40,000 की जगह पे हम आपको 36,000 में देंगे. फ्रैंक्स मतलब, सॉरी. Lawson possessed 18,000 francs होती, which his father had left him. He borrowed the rest. अब बोरो किया, उसके लिए क्या काम करना था? खुद की लाइफ को रुइन करना था. ही मेड ruinous promises, बहुत सारे promises दिए अलग अलग लोगों को कि मैं आपका काम करूंगा, आपका काम करूंगा, आप मुझे लोन दे दो. He took money from usurers, money lenders, and the whole race of money lenders. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. When Madame Loisel took back the jewels to Madame Forrester, the latter said to her in a frigid tone, a bit of anger, "You should have written them to me sooner, for I might have needed them." थोड़ा जल्दी दे पाती तो अच्छा था, मुझे जरूरत पड़ती तो. Madame Forrester didn't open the jewel box that Madame Loisel feared she would. अब मैडम फॉरेस्टर ने तो अपना ज्वेल बॉक्स खोला नहीं, उसने तो कबर्ड में रख दिया. मैडम लॉयसेल को डर था कि अगर इसे पता चल गया कि हमने सब्स्टिट्यूशन रखा है तो क्या होगा. What would she think if she should get, she should know, she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? चोर कहा तो उसे, और अगर पता चला तो what is she going to say? What should she say? Madame Loisel not knew the horrible life of necessity. मैडम लॉयसेल को तो पता ही नहीं था नेसेसिटी वाली हॉरिबल लाइफ. शी डिड हर पार्ट, हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली, लेकिन बेचारी ने अपना काम हिम्मत से किया. मैडम लॉयसेल ने. इट वाज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, कर्ज तो चुकाना था. शी वुड पे इट. दे सेंट अवे द मेड, छोटा बड़ा काम करने के लिए जो नौकरानी थी उसको निकाल दिया. दे चेंज द लॉजिंग्स, घर बदल दिया. रेंट पे रहने चले गए. दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, खराब से घर में और खराब से सस्ते से घर में चले गए रहने. She learned the odious work of a kitchen. किचन का काम थोड़ा बहुत करने लगी. She washed the dishes. She washed the soiled linen, dirty linen. कपड़े धोने लगी. Their clothes and dish clothes, which she hung on the line to dry. She took down the refuse, मतलब कचरा घर का, to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing. हर एक स्टेप पे जब पानी भर के ऊपर आती तो थकते हारते ऊपर चढ़ती थी. To catch her breath, सांस फूल जाती. So she was stopping at each landing to catch her breath, and clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers, the fruit sellers, with a basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of a miserable money. Right? तो last तक you can understand कि एक एक पैसा बचाने के लिए वो हैगलिंग करती है, मतलब कहीं ना कहीं वो नेगोशिएट करती. तो लास्ट मोमेंट तक हैगलिंग करना मतलब एक लास्ट एक एक पैसे के लिए वो नेगोशिएट करती, बार्गेनिंग करती मार्केट में. द हस्बैंड वर्क इवनिंग्स, बेचारा हस्बैंड इतने सालों से अपने क्लर्क की नौकरी के बाद वापस इवनिंग में एक्स्ट्रा काम करता, पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, अकाउंटिंग करता. एंड नाइस ही ऑफन इट कॉपिंग एट 5 sous अ पेज, मतलब जैसे 5-5 रुपए के लिए एक एक पेज लिखता. एंड जैसे अभी टाइप करते हैं वैसे टाइप, मतलब वी do all this work on computers, laptops and all, तब वो लिखने के काम करते थे. And this life lasted for 10 years. 10 साल में तो 50 साल बड़े हो गए थे. At the end of 10 years, they had restored all, पूरे पैसे चुका दिए.
Madame Loisel seemed old now. अब बेचारी बूढ़ी दिख रही थी. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. Her hair badly dressed, ना बाल बनाती बेचारी, और her skirts awry, गंदे से कपड़े, her hands red. She spoke in a loud tone, washed the floors with large pails of water. Sometimes when her husband was at the office, she would sit herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. कभी कभी शाम को जब अभी उसके हस्बैंड नहीं आए आते ऑफिस से, तब तक वो विंडो के पास जब फ्री होती तो अपने घर के विंडो के पास बैठ के सोचती उस इवनिंग के बारे में जब लोग उसकी वाह वाह करते थे. हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस? अगर नेकलेस लूज नहीं किया होता तो आज लाइफ कैसी होती? हु नोज हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस. हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन. छोटी सी चीज किसी को बर्बाद भी करे, किसी को बचा भी ले. One Sunday, she was taking a walk in the sham Celsius, that is in a garden, to rid herself of the cares of the week. पूरे वीक की थकान मिटाने के लिए वो संडे को एक दिन वॉक पे निकली थी गार्डन में. She suddenly perceived a woman. She saw a woman walking with a child. It was Madame Forrester, still young, still pretty, still attractive. Madame Loisel was affected. फिर दुख हुआ, फिर jealousy आई. अब उसे लगा, should she go and speak to her? Yes, certainly. Now that she had paid all the money, she would tell her all. अब जाके सब कुछ बताती हूँ. Why not? She approached her. Good morning, Jane. Her friend didn't recognize her and was shocked to be so familiarly addressed by this common name, by this common personage, pet name. She stammered, but madam, I don't know you. You must be mistaken. No, I'm Matilda Lawson. Her friend uttered a cry of astonishment. Oh, my poor Matilda! How you have changed! Yes, I have had some hard days since I saw you. तुम्हें जब लास्ट देखा उसके बाद तो मेरी लाइफ ही टर्न हो गई. बहुत बुरे दिन आए. And some miserable days. There is some miserable ones. And all because of you. ये बेचारे कहते, oh God, because of me? Tell me how's that? You recall the diamond necklace that you loaned me? That is जो उधार तुमने मुझे दिया था पहनने के लिए, to wear to the minister's ball? And the lady saying, yes, yes, very well, I remember. Well, I lost it. How's that? Since you returned it to me. अब लॉयसल कहते मैंने तो वो खो दिया था. लेकिन उसकी फ्रेंड कहते कैसे खो दिया? तुम तो मुझे वापस देके गई थी. आई रिटर्न अनदर वन टू यू एग्जैक्टली लाइक इट. नहीं, मैंने ऐसा ही खरीद के तुम्हें दूसरा दिया था. एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट. यू कैन अंडरस्टैंड. It was not easy for us who have nothing. But now it's finished. मैंने सारा लोन चुका दिया. And I'm decently happy. Now I'm decently contented. Madame Forrester stopped short. She said, you say that you bought a diamond necklace to replace mine? Yes. You did not perceive it then? They were just alike. क्या तुमने नहीं देखा था? दोनों सेम है. And she smiled with proud and simple joy. बेचारी वो फ्रेंड कहती है. Madame Forrester was touched and took both her hands. बेचारी मैडम, अब देखो, लॉसल ने तो विद प्राउड एंड सिंपल जॉय के साथ उसने कहा यस. लेकिन फॉरेस्टर बेचारी, उसको बहुत दुख हुआ. उसने अपने फ्रेंड लॉसल के हाथ हाथ में लिया. उसने कहा, ओ माय पुअर मटिल्डा, माइन वो फॉल्स. मेरे तो जैसे ना रियल डायमंड एंड अमेरिकन डायमंड, तो मेरे तो झूठ मूठ के डायमंड के थे. दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स. 500 फ्रैंक से ज्यादा नहीं थे. अब हम इमेजिन करेंगे तो उसको तो वापस मिलना चाहिए. हाँ, मिलना चाहिए. चलो वो दे भी देगी उससे रियल डायमंड वाला वापस. बहुत उसको बेच के बहुत सारे पैसे आएंगे उनके पास. लेकिन अब जो 10 साल लाइफ के चले गए वो तो थोड़ी ना वापस मिलेंगे. सो दिस इज व्हाट इज अ मॉरल. बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव and don't be jealous or hatred with what other people have, because grass is greener always on the other side. We never know what is on the other side over there. सब कुछ अच्छा लगता है दूर से, right? But always be contented, that is satisfied, happy with what you are given. And of course I would always say that jealousy hatred वाली feeling तो होनी नहीं चाहिए, but work hard for what you want and you will get it, right? So see the following video, या अलग से वो भेज देती हूँ मैं. But till then, thank you so much. And we next lecture next week से हम मिल रहे हैं for tenses, grammar. Thank you very much. The necklace. A long time ago,
one of the most pretty and charming girls was born. Her grace and beauty was so great that she was meant to live a luxurious life, wearing beautiful clothes, expensive jewelry, and residing in a big mansion. She could have easily been taken as a lady of great wealth. But it seemed that fate played a trick on her, and she was born into a poor family. They had no dowry for her. She finally married a little clerk, Loisel, in the Ministry of Education. Madame Loisel, as she came to be called, was very unhappy with her life. She believed that though she was born beautiful and clever, fate, by not making her born in a rich household and married into a richer one, had played a cruel joke. She imagined vast salons decorated with antique silks, exquisite pieces of furniture supporting priceless ornaments, where she could give big parties. She wished to live a life that would complement her beauty. And when she and her husband sat down for dinner, while her husband exclaimed delightedly, "Aha! Broth! What could be better?" she imagined delicate meals served on silver plates. Madame Loisel had no fine clothes, no jewels, nothing. And these were the only things she loved. She had a rich friend, an old school friend, whom she refused to visit because she felt sorry for herself after meeting her own friend. One evening, her husband came home with an exultant air, holding a large envelope in his hand. "Here's something for you," he said. Swiftly, she tore the paper and drew out a printed card on which were these words: "The Minister of Education and Madame Ramponneau request the pleasure of the company of Monsieur and Madame Loisel at the Ministry on the evening of Monday, January the 18th. Instead of being delighted, as her husband hoped, she flung the invitation across the table, murmuring, "What do you want me to do with this?" "Why, darling, I thought you'd be pleased. You never go out, and this is a great occasion. I had tremendous trouble to get it. Everybody wants one. It's very select, and very few go to the clerks. You'll see all the really big people there." She looked at him out of furious eyes and said, "And what do you suppose I am to wear at such an affair?" He stammered, "Why, the dress you go to the theatre in. It looks very nice to me." Madame Loisel started to cry. "What's the matter with you? What's the matter with you?" he asked hesitantly. She replied, "Nothing. Only I can't go to this party as I don't have anything to wear." The husband was heartbroken. "Look here, Mathilde," he persisted. "How much would a nice but simple dress cost?" She thought for several seconds, thinking how much money she could make her husband give her without him refusing. At last she replied, "I don't know exactly, but I think I could do it with 400 francs. He grew slightly pale, for this was exactly the amount he had been saving for a gun. Nevertheless, he said, "Very well. I'll give you 400 francs. The day of the party drew near, and Madame Loisel seemed anxious. One evening, her husband said to her, "What's the matter with you? You've been behaving very oddly." "I'm utterly miserable because I don't have any jewelry to wear with it," "How stupid you are!" exclaimed her husband. "Go and see Madame Forestier, your friend, and ask her to lend you some jewels. You know her quite well enough for that." She exclaimed, "That's true. I never thought of it." Next day, she went to see her friend and told her trouble.
Madame Forestier took Madame Loisel to her dressing room and said, "Choose, my dear." Madame Loisel finally chose a superb diamond necklace which she wore with her gown. She was the center of attraction at the party. Everyone noticed her. All the men wanted to dance with her. All the ladies praised her. She received many compliments. Madame Loisel felt truly happy and thankful for the first time in her life. When they reached home, she discovered that the borrowed diamond necklace was missing. They looked everywhere but could not find it. Scared of going to the prison, they sold everything they had and borrowed money to raise 36,000 francs to buy a replacement. The husband worked 2 jobs. They shifted to a smaller house, and Madame Loisel, who had dreams of a luxurious life, had to do her own work. She came to know what abject poverty meant. In 10 years, they were able to pay back all the money they had borrowed. By then, she lost all her beauty and looked older. What would have happened if she had never lost those jewels? Who knows? Who knows? How strange life is, how fickle, how little is needed to ruin or to save. One day, she saw her old friend Madame Forestier walking with her daughter. She was still beautiful and graceful. Madame Loisel decided to go and meet her friend and tell her about what happened. "Good morning, Jean." The other did not recognize her. "I am Mathilde Loisel." "Oh, my poor Mathilde, how you have changed." "Yes, I've had some hard times since I saw you last, and many sorrows, and all on your account." "On my account? How was that?" "You remember the diamond necklace you lent me for the ball at the ministry?" "Yes, well?" "Well, I lost it." "How could you? Why, you brought it back." "I brought you another one just like it, and for the last 10 years we have been paying for it. You realize it wasn't easy for us. We had no money. Well, it's paid for at last." Madame Forestier had halted. "You say you bought a diamond necklace to replace mine." And she smiled in proud and innocent happiness. Madame Forestier, deeply moved, took her 2 hands. "Oh, my poor Mathilde! But mine was an imitation. It was worth at the very most 500 francs.